Hello everyone, I Neha works as an assistant professor at IPM College Ghaziabad. Today I am going to deliver my lecture on cost and management accounting, which is a subject in BCom third semester, and it is like that. So in this video lecture, I'm going to cover topics such as meaning of cost accounting, nature, scope, advantages, disadvantages, difference between cost accounting, financial accounting, and the installation system of costing. So let's get started with the very first slide. So here you can see the meaning of cost accounting. So cost accounting is, firstly, cost accounting is one of the branch of accounting. If I talk about branch of accounting, so mainly there are three branches of accounting. One is financial accounting, second one is cost accounting, and third one is management accounting. Financial accounting, the term financial accounting, you all are very well aware of this term. सो मैं वो टच नहीं कर रही हूँ, बट अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करती हूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग. क्या करते हैं हम इसमें? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं कॉस्ट टू हेल्प मैनेजमेंट मेक प्रूडेंट बिजनेस डिसीजन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बुकिश लैंग्वेज, राइट? बुक के अकॉर्डिंग ही हमने पढ़ ली, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स to determine the cost of a particular product. मीन्स अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस चीज़ की रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में. सपोज करिए अगर मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में रेनॉल्ड्स का 10 रुपीज़ वाला पेन है, तो उसकी उस पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ कैसे आई? ठीक है, ये पता करने के लिए, ये मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि उस पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट 10 रुपये ही क्यों हुई, इसके लिए मुझे पूरा एक प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है, एंड दैट प्रोसीजर comes in cost accounting. So cost accounting is nothing but to determine the cost of a particular product. अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें आप रिकॉर्डिंग भी करते हो, इसमें आप क्लासिफाइंग भी करते हो. किसको किसको रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग करते हैं? जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने करी हैं, समराइज करते हो एंड एनालाइज करते हो कॉस्ट को. टू हेल्प किस लिए की जाती है? सारी चीज़ें किस लिए हेल्प की जाती हैं? मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक correct decisions, right? Then comes to need of cost accounting. So in every economic activity, particularly an activity involved in the production of goods or in rendering services, involves some expenditure, है ना? अब कुछ भी, किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब में खर्चा तो इन्वॉल्व होता ही है. अब उस खर्चे को रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे? दैट इज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट? इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में होता है? वो टर्म होती है आपके डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट. कुछ खर्चा हमारा डायरेक्ट होता है, कुछ खर्चा हमारा इनडायरेक्ट होता है. अब ये क्या होता है कि डायरेक्ट खर्चा कौन सा है, इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा है? It means कि direct cost and indirect cost. So indirect cost, that cost which is related directly to the product, है ना? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उससे रिलेटेड, उससे डायरेक्टली जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट होती है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है. The major purpose of such activities in a business enterprises is to earn profit. अब जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू नो द प्रॉफिट एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. वैसे ही सेम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. It is therefore necessary that all the three elements of cost, such as cost, profit, and price, are clearly identified. Definition of costing and cost accounting. So the term costing is quite different from the word cost accounting. So before to understand the word cost accounting, it is necessary to know the meaning of costing. So in costing,
It refers to the techniques and process of ascertaining the cost, which consists of principles and rules which is applied for cost of product manufacture and service rendered. While the term cost accounting refers to the process of accounting for cost, right? खर्चा क्या हुआ है, that is costing, लेकिन उस खर्चे को रिकॉर्ड कैसे करना है, that is cost accounting. So cost accounting begins with the recording of all the incomes and expenditures and ends with the preparation of periodical statements and reports of ascertaining and controlling cost. Moving towards our next slide, which is objective of cost accounting. So there are some 10 objectives which an organization kept into mind while doing cost accounting. So what are the basic objective of cost accounting? To ascertain the cost of product and services first, है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को तो ascertain कर रहे हैं, तो this is our first objective. Firstly, we ascertain the cost of product and services. Second, then we fixed the price of selling price and quotation for tenders, identifying the causes of wastage and apply appropriate course of actions for checking the wastage. To control cost by analysis and comparison, and जब इतना सब कुछ हो जाता है तो फाइनल हमारा स्टेप क्या होता है, जितना भी हमने रिकॉर्डिंग करी है ट्रांजेक्शन्स की, जितना भी इसको क्लासिफाई किया है, जितना भी उनको समराइज किया है, तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन, हमारे पास में डेटा आ गया है. उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को हमने किसे देना है, हमने देना है मैनेजमेंट को. उससे क्या होगा, सो मैनेजमेंट कैन टेक fruitful decision which is helpful for company's growth, right? So at the last, what are the last objective? To communicate to the management all information relating to cost and facilitate manager decision making. Comes to financial accounting and cost accounting. So the objective of, firstly we have to write basis, then on what basis we differentiate financial accounting and cost accounting. So these are objective. अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ to identify the profit or loss of a business and to know the financial position of a business, right? जबकि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की जब मैं बात करती, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. असरटेनमेंट लिखा गया हो ना, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. नेचर की जब हम बात करते हैं, तो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड्स डेटा based on present and interprets transactions in monetary term, while in cost accounting it classifies cost records present and interprets it in a significant manner. Recording of data, financial accounting में data है that's record on historical base, but in cost accounting the data is record on both historical and predetermined cost. Who are the users of information, मतलब किसको हमें information देनी है. तो basically in financial accounting the users of financial accounting informations are shareholders, stakeholders, creditors, and government agencies. These are the financial users of the business of internally and externally. While in cost accounting, so information is generally used by the internal management, but sometimes regulatory authorities also. Analysis of cost and profit. So in financial accounting, financial accounting shows profit or loss of the organization either segment wise or as a whole. But while in cost accounting, it provides the cost details for each object, that is product, process, job, contract, etc. Time period. If I talk about financial accounting, तो financial accounting में जो financial statements हैं that are prepared usually for a year, हम लोग एक साल के prepare करते हैं. आपने देखा भी होगा जब हम लोग balance sheet prepare करते हैं, that time we write 31st March and X year.
ठीक है। तो हम फॉर अ ईयर प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम तब इसको कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। Presentation of information. So in financial accounting, a set format is used for presenting financial information, but in cost accounting, no set formats for presenting cost information is followed. What are the advantages? So here are the advantages of cost accounting. In cost accounting, we with the help of cost accounting, we fix the selling price of a particular product, compilation of correct and reliable cost data, preparation of budgets and business forecast, continuous flow of information regarding production cost, material, labor, which assist output planning. Next, measurement of efficiency of operations through establishment of standards and analysis of variance. So these are the advantages of cost accounting. Thank you. So this is for all today. Thank you. Hope you will like the session.